Yes. Now we'll continue with the same cases of diarrhea. This is case number 2. Just look into this case. Okay, this is 2-month-old child. Okay, 2-month-old child means 2-month-old infant passing loose stools 10 to 15 times per day since last 2 weeks. Since last 2 weeks, baby is passing about 10 to 15 times per day. Prior to that, he used to pass only 3 to 4 semi-solid stools per day. That means बच्चे का उम्र तो 2 महीना है. 2 महीने पहले मतलब लगभग 2 वीक से पहले तक बच्चे को 1.5 month जब होगा तब तक prior to that child is only passing 3 to 4 semi-solid stool. But now last since 2 weeks child is passing about 10 to 15 times. Okay, and if you look into the other details, child is breastfed, child is exclusive breastfed, and child is not sick, child is not sick looking. Okay, now child is happy, it's not sick looking. Grandmother says mother has been started eating some outside food since last 2 weeks. अब दादी माँ का कुछ और ही कंप्लेंट है. ये बच्चा सही था और इसका स्टूल सब सही होता था, बट ये मदर ने जो है कुछ बाहर का चीज़ इधर उधर का चीज़ खाना शुरू कर दिया और इसके बाद जो है इसको ये सब हो गया. दिस इज़ व्हाट ग्रैंड मदर से साइड में आके आपको बोल रही है. ठीक है. सो नाउ स्टूल एग्जामिनेशन व्हेन यू आर डूइंग दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई. बच्चे के जब स्टूल को निकाले आपने स्टूल एग्जामिनेशन किया, सो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई. सम पस सेल्स आर आल्सो देयर एंड सम रिड्यूसिंग सब्सटेंस आर आल्सो देयर. Now, what you infer in this case? 2 महीने का बच्चा है. Yes, anybody? Small intestine infection. Okay, according to you, it is a small intestinal diarrhea. Okay. Infection होता तो sick looking होता है ना, बच्चा happy looking है तो weight gain भी proper कर रहा है वो. हाँ, okay. इसमें मतलब जैसे ऐसा तब हो सकता है जैसे मदर बोल रहा है ना बाहर का खा रही है, तुम्हें भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले रही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा वो लेगी तो उसकी वजह से भी बच्चे को डायरिया नॉर्मली हो सकता है. Very good. Any other problems? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है ना मेन चीज. तो ये है वो डायरिया है लेकिन उसका वेट लॉस नहीं है. तो जो है उसको प्रॉब्लम इतनी नहीं है और उसको डायरिया नहीं बोलेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन जरूर बोला जा सकता है. Child is not looking sick, child is happy, one thing. And if you look into the stool examination, there is one more point, reducing substances. Now what it is indicated? रेड्यूसिंग सब्सटेंस है. रेड्यूसिंग जहाँ पे लैक्टोज का प्रॉब्लम रहेगा और जहाँ पे इंटेस्टिनल का म्यूकोसा इरोड हो गया तो वहाँ पे सब मैंने बताया था कि रेड्यूसिंग सब्सटेंस आ ही जाएगा, क्योंकि लैक्टोज सुपरफिशियली आता है, लैक्टेस. तो बट चाइल्ड इज नॉट सिक लुकिंग. बट इफ यू से द डायग्नोसिस इज एग्जैगरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, आपको भी लगता होगा ना, इजंट इट? Yes, sir. इनमें भी एग्जैगरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, इसलिए 10-12 बार कर रहा है बट फिर भी बच्चा सिक नहीं है, एक्टिव है. तो ये तो एग्जैगरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होना चाहिए. इफ़ दैट इज़ द केस, ये जो है पिछले 2 वीक से ही क्यों शुरू हुआ? अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता तो शुरू से होना चाहिए था. अब 1.5 month तक बच्चा सही था और उसके बाद सडनली इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ. डू यू थिंक इट इज अ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड? नो सर, No, sir. So what is this case? So let us see into the case. Now look into the details. Now one is age of the child is 2 months and taking only breast milk. When only taking breast milk means we can expect that a lot of lactose is going inside, and happy and also gaining the weight. Baby is also gaining the weight. This is very important. Okay, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है कि इसका लॉस ऑफ वेट हो रहा है. But previously child is passing semi-solid stool, but now it is passing loose stools which increase the frequency. This is a problem. Last 2 weeks से जो है वो बहुत ज़्यादा loose stool पास कर रहा है. Previously वो semi-solid stool पास कर रहा था, everybody is happy, no problem, only 3-4 times दिन में कर रहा था. Now the frequency is increased and it is also loose stools. But child is normally gaining the weight. So what you say? Child is normally gaining the weight and happy looking means there is no problem with the absorption at all, because it's gaining the weight. Okay, it is also happy looking. Then what is the problem? What is the cause of loose stools which started suddenly? Semi-solid stool से suddenly उसको loose stool कैसे आ गए? Okay. Now क्या we will give importance for grandmother's complaint?
ग्रैंड मदर जो बता रहा है कि मदर का जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो गया, तो इसलिए ये वो ज़्यादा रसगुल्ला शक्कर ये सब खाना शुरू कर दिया, मीठा वगैरह, इसलिए हो रहा है. दिस इज व्हाट एक्चुअली मदर ग्रैंड मदर इज टेलिंग. शैल वी गिव सम इंपॉर्टेंस फॉर दिस ओपिनियन? डू यू थिंक? Yes, if you look into Ayurveda it is very clearly told. What is that? Ahar rasa leads to the formation of the rasa dhatu, and stanya is nothing but upadhatu of the rasa dhatu, isn't it? So one thing is very clear: the breast milk is directly affected by the food habits of the mother. There is no doubt. Okay, ahar से रस धातु बनता है, और रसदा से जो है रस धातु को उपधातु है जो स्तन्य है. Okay, breast milk है. So now suppose if mother is taking more amount of the carbohydrate rich food, okay, carbohydrate मधुर आहार का सेवन वो ज़्यादा कर रहा है, कफज आहार या मधुर आहार का सेवन ज़्यादा कर रहा है, so that suggests mother is taking more amount of the carbohydrate. Mother is taking more amount of the carbohydrate, and definitely she may produce the milk which is having more carbohydrate compared to other substances like fat and proteins. This is one possibility is there. Okay, if since last 2 weeks mother is indulging in external food habits, okay, so this we have to give some importance for the grandmother's opinion, no doubt, according to Ayurveda when we talk. Okay, so since last 2 weeks now child is consuming more carbohydrate rich food, and more carbohydrate means more lactose means more sugar means every chance of loose stone. Okay, as it started only after 2 weeks, before 2 weeks, and the meantime there is also history of intake of external more carbohydrate rich food. Yes, this may be the cause, and this is also what Ayurveda also says. Okay, this point is valid, no doubt. So external, that means change the food pattern of the mother, especially more carbohydrate food, may be the cause of this particular change, because child is gaining the weight normally, there is no much problem, child is happy, so this is a problem. Okay, but now what you say about this E. coli in the stool? Stool also contains E. coli and reducing substance. Reducing substance is justified. Okay, you are taking more madhurahara. Okay, it is justified. But E. coli is normally present, we know that. Okay, so stool collection जो है वो भी बहुत important है. Stool collection का अगर मेथड सही नहीं है तो E. coli आ सकता है, और some normal amount of the E. coli का 3 स्टेन है, we know that. ठीक है, जो E. coli जो है एंट्रोकोलाई है जो नॉर्मल है, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया एक्चुअली, सो वो भी आ सकता है E. coli में. ठीक है, so definitely this is a problem with the change in the diet of the mother, and also another possibility is mother is only giving 4 milk, ये भी हो सकता है. ठीक है, यूजुअली क्या है कि फॉर द फर्स्ट 1.5 month मदर एंड चाइल्ड विल बी आइसोलेटेड एंड मदर कैन गो फॉर अ कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 20 मिनट तक वो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है. हो सकता है कि अभी कुछ 2 वीक से जो है वो सेपरेट रूम में नहीं खिला रहे, मतलब सबके साथ वो भी रहना शुरू हो गया क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया. Now so many people are coming there and distracting while breastfeeding, and baby is disturbed. वो थोड़ा बहुत पीने के बाद वो छोड़ देता है, और मदर भी छोड़ देती है. उसके बाद 15 मिनट के बाद वापस पीता है, तो क्या आएगा वापस? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या 4 मिल्क ही आएगा. तो 4 मिल्क यूजुअली कंटेन्स मोर कार्बोहाइड्रेट. दिस मे बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. ठीक है, सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, एनीवे क्राइटेरिया क्या रहा हमारा? What is important? Sick child and non-sick child. ठीक है, वेट गेन एंड नॉट वेट गेन. देयरफॉर आई विल से दिस आर द बेसिक थिंग्स जो हमें पूरा डायग्नोसिस में गाइड करता है. ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है. गो टू द बेसिक्स. चाइल्ड लुकिंग वेल, चाइल्ड नॉट लुकिंग वेल, चाइल्ड इज गेनिंग द वेट, चाइल्ड इज नॉट गेनिंग द वेट, चाइल्ड इज इरिटेबल, चाइल्ड इज नॉट इरिटेबल. ओके, बेसिक थिंग्स. So this is one very interesting case. Okay. So now we'll go for another case. This is a case. 3-month-old infant presented with the loose stools for the last 2 weeks. Child is on exclusive breastfeeding. Child is playful, gaining the weight, passing the urine 12 times per day.
Stool frequency is about 15 loose stools per day. Color of the stool is golden yellow. Duration is 2 weeks. And progressive. Yes, now it is your term. आप डिस्कशन करो इसके ऊपर. Almost all case looks like a previous case, है ना? पहला वाला केस के जैसा ही दिखता है, but any changes? फीडिंग पैटर्न ही सही नहीं है, वही सेम कार्बोहाइड्रेट शायद पहले वो पिला रही है, इसकी वजह से हो रहा है, 4 मिल्क की वजह से. Okay. 3-month-old infant presented with the loose stools for last 2 weeks. Almost all same case जैसा ही है presentation. वहाँ पे 2 month का था, यहाँ पे 3 month का था. Exclusive breastfeeding में है, ठीक है. Child is playful, active, है, gaining weight, passing urine 12 times per day. Yes, child is passing urine 12 times per day. Whether there is any significance? Stool तो 15 times जा ही रहा है उसका loose stools, but 12 times भी जा रहा है urine. Yes, again it indicates that because in the 4 milk carbohydrate and water portion is more. ठीक है, तो वही इंडिकेट करता है कि मदर वो है बहुत ज़्यादा 4 मिल्क दे रहा है उसको. ठीक है, therefore baby is receiving more water, therefore more urine is passed. ओके, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी है, वो भी जो है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है. So yes, almost all looks like the same case, but here it is exaggerated gastrocolic reflex, or again, is it exaggerated gastrocolic reflex? नहीं, अगर ऐसा है तो शुरू से होना चाहिए था, isn't it? शुरू से होना चाहिए था. exaggerated gastro reflex है, नहीं तो ये तो अभी लास्ट 2 weeks से शुरू हुआ है. So therefore it is not even exaggerated gastrocolic reflex. Okay, so this is again we are discussing on the same thing. 2-month-old infant presented with a history of 7 to 8 stools day for the last 2 weeks. Earlier he used to pass a semi-solid stool 2 to 3 times per day. No other complaints. Child is gaining the weight normally and not sick, so there is no foul smelling, non-sticky, and quantity is less. Stool examination is positive for bacteria and the reducing substance. Okay. So this case is also looks like a more 4 milk consumption or altered presentation. Now look into this particular case, case number 3 in that A portion. 2-month-old infant presented with a history of 7 to 8 loose stools per day for the last 2 weeks. ये भी almost all same है. Earlier 2 to 3 times per day जा रहा था. No other complaints. Child is gaining the weight normally and child is not sick. Okay. There is no foul smelling diarrhea. Non-sticky and quantity is less. Okay, breastfeeding means quantity will be always less because everything is absorbed. Okay, stool examination is positive for bacteria and reducing substances. This also looks like a similar case. Anyway, we will see that. So child is not sick looking. Now look into the color of the stool. The color of the stool is also normal. Okay, if green, white and other than this normal, then it is brown. Green means it may be hunger diarrhea. If it is white means it may be fatty diarrhea. ठीक है, if the blood, again this is dangerous. ऐसा कुछ नहीं, ये normal है. ठीक है, yellowish है, golden yellowish है. So you can say that it is gastrocolic reflex. Gastrocolic reflex है तो वही है, वापस वही बात आएगा कि शुरू से आना चाहिए था, suddenly कैसे शुरू हो गया. But now, although there is no change in the feeding pattern and food, why the change occurs? Why the change occurs? Now as we know that same, this case is also same. This is a case of a 4 milk consumption. Okay, ये भी जो है, this is given in detail, that's all. This is also the same case. Okay, I am not going to detail, we have already seen this case. Okay, so now